HDFC Bank versus ICICI Bank. तुम लोग अपने आप को जेनजी बोलते हो यार, इंटरनेट बैंकिंग भी नहीं हो पाती इस बुड्ढू के बैंक से। अरे बुड्ढों का बैंक इज मच बेटर देन चोरों का बैंक, ठीक है? Before we start, here are the ground rules. No gali, only tali. Back your arguments with data. Qualitative arguments will not get any points. And finally, comeback gets extra points. By the way, if you look at Bank Nifty, you'll notice that the entire index is mostly made up of only two stocks. HDFC Bank is what? 38%. And ICICI Bank is 35% weightage. More than 70% just goes to these two banks. So we thought, why don't we have a debate? Round one, begin. So let's start with HDFC Bank. Tell me, अभी क्या हो रहा है HDFC that's interesting? यार एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आई थिंक ये डिबेट की जरूरत ही नहीं है। आई मीन HDFC और HDFC बैंक का मर्जर, द बिग इज गेटिंग बिगर। क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखो यार। करेक्ट। उतना ही नहीं, आप देखो 20 साल से HDFC बैंक को दे डोंट गिव आउट लोन्स टू एनीबॉडी। किसी को भी वो लोग ऐसे लोन नहीं दे देते, सोच समझ के देते हैं। आई मीन HDFC was among those few banks जिनने किंगफिशर एयरलाइंस को लोन नहीं दिया था, और ICICI सबको लोन देता है। हाँ से किंगफिशर एयरलाइंस पे आ गए, थोड़ा पर्सनल, थोड़ा ऑन द ग्राउंड रहो। आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी इन ICICI बैंक एंड मेरी तो बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई हैं उससे। एंड डू यू इवन नो कि इंटरनेट बैंकिंग कितना अच्छा है, एवरीथिंग एट वन प्लेस। व्हाट अबाउट योर बैंक? ऑल्सो कैशबैक्स भी इतने अमेजिंग होते हैं हमारे। तुम्हारे पास तो शायद सिर्फ गुड बुक्स, नो कैश। अरे प्रॉपर टेक टीम ही नहीं है भाई, टेक टीम के ही खर्चे नहीं उठा पा रहे हो तुम लोग। बूढ़ों की बैंक है ये और कुछ नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्या मैनेजमेंट है हमारी, मैनेजमेंट देखिए। संदीप बख्शी साहब ने पूरे बुक्स की टर्न अराउंड कर दी, NPA खत्म हो गए भाई। Hold up. Guys, I think this is getting a little too emotional. You're talking a little too about qualitative stuff. Let's get down to numbers. So why don't we do a quantitative framework? First, let me explain three things that you guys, the viewers, should know. I'll only take a minute. One, the CASA ratio. It's basically the ratio between current account and savings account. It basically says how much money this bank has so it can give out loans safely. So higher the CASA ratio, lower the cost of funds, and that basically means they make more money. Capital adequacy ratio basically measures the amount of capital the bank has versus all of its liabilities. Imagine, बहुत सारा liability, little bit of capital, highly risky. We're not an American bank, right? So the higher the capital adequacy ratio, the better the bank is, the safer the bank is. Finally, we have net interest income. Very simple. All the loans you take from a bank is a way the bank makes money. Could be a personal loan, mortgage, etc., etc. How much money the bank is actually making is measured by net interest income and net interest margin. So now let's see what these banks have to say based on this qualitative metric. अरे HDFC Bank is the best in all of these metrics. We've had the best CASA ratio, we have always the highest capital adequacy ratios, and we have the best net interest margins in town. So HDFC Bank proves good on all of these metrics, and it has been doing so for last 20 years. ये तो 20 साल पुराने की बात है यार। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, अभी की बातें करो। 2018 से संदीप बख्शी साहब ने जो काम किया है ना, दैट इज worth looking at. The loan book growth has accelerated like anything. NPAs are down. There is super risk management. The quality of the loan book has increased by like leaps and bounds. So it makes no sense when you're talking to 20s about the past. बूढ़ा घोड़ा है, थक गया है, रेस्ट कर लो। अरे but that doesn't make sense. See, 20 years ago what was started, today look where it is. Number 1 in credit cards, number 1 in housing finance, number 1 in private banking. What else do you want from a bank? अरे we have the business customers ना, the commercial bank. We are the number 1 commercial banking. अरे क्या नंबर वन? It's not going to make you any money. मनी वो कंपनीज बनाती हैं जो ग्रो हो रही हो, एंड ICICI बैंक इज एक्चुअली ग्रोइंग अ लॉट एंड इट्स गोइंग टू बिकम नंबर 1 वेरी सून. एज इन्वेस्टर्स यू कांट जस्ट लुक एट कंपनीज दैट आर गुड ऑन बुक्स, यू हैव टू लुक वेयर यू आर गोइंग टू मेक मनी. See, there is something called the base effect in the market. If you have a smaller base, your growth will look larger. We have a much larger base, and a 10% growth is also much larger than you guys right now. Exactly, and they are talking about NPAs consistently below 1%. आपका NPA देखा है? ये तो यार रिकवरी के लिए काम आएगा. अरे ओ प्लीज, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोबाइल. इस पे होती है मोबाइल बैंकिंग. आपने तो सुना नहीं होगा, पासबुक भर रहे होंगे, चेकबुक भर रहे होंगे, इस पे होती है आजकल बैंकिंग. टेक है तुम लोगों के पास? आ पाएगा? इतनी बुरी कंपनी है, आई डोंट थिंक. हम ब्रांच जाके RTGS का फॉर्म नहीं भरते हैं. ट्रू.
अरे बिजनेस, चलो ठीक है, बिजनेस का आप बात कर रहे हो। आप मेरे को ये बताओ, बिजनेस अगर खराब होता, आपने स्टॉक प्राइस देखा है HDFC बैंक का, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है 20 साल से और लग रहा है वही डायरेक्शन में जाएगा। ICICI को देखो, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ये क्या वॉलेटिलिटी है? मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, आप अभी की बात करो, पिछले 5 सालों में ICICI बैंक इज द टॉप परफॉर्मिंग बैंकिंग स्टॉक इन द बैंक निफ्टी इंडेक्स, ठीक है? यू शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट्स दैट कि 5 साल की डेटा की बात करो आप, अभी की। पिछले 5 सालों में ICICI बैंक ने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया। HDFC बैंक इज फ्लैटिश, इट्स नॉट इवन ग्रोन 10% ईयर ऑन ईयर। See, but ICICI Bank is so volatile. What if they decide to give a bad loan again? Exactly. And they are talking about 5 years. The stock is at an all-time high. Sorry, the stock is at an all-time high. Because it was at all-time low for quite a long years, okay? अरे ऑल टाइम लो पे तो तुम्हारी कंपनी कल्चर है भाई, पूरे इंटरनेट पे दिख चुकी है, सबको, दुनिया को दिख, सामने आ गई है सारी बातें। अरे तुम लोग क्या ऑल टाइम हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हो? तुम्हारे कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखो, फैमिली मेंबर्स कोई लोन दे रहे हैं, फैमिली मेंबर्स कोई एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस? RBI ने हमें ब्रांच खोलने से तो नहीं रोका कभी। क्योंकि इतनी ब्रांचेस खुल गई थी, RBI भी परेशान हो गया था, कहाँ तक ब्रांचेस खोले, थोड़ा ICICI को ही मौका मिले। ब्रांचेस तो खोलने दे नहीं रहे हैं, क्रेडिट कार्ड बैन हो गए, और ये बैड मैनेजर की पिटाई से बचने के लिए रखा होगा आपने। अरे भाई ग्रोथ आएगी कहाँ से इन लोगों की? आदित्य पुरी साहब तो कब के रिटायर हो गए। ठीक है गाइस, लुक, आई थिंक वी नीड अ क्वांटिटेटिव मेट्रिक। ये तुम ज़्यादा इमोशनल पर्सनल हो गए, इतना कल्चर। Look at these two tables. You will be able to compare both of these banks and make your decision which is good and which is not. But the fact of the matter is, both these banks are important because they're a major part of the Indian banking system. Actually, little more than 70% of Bank Nifty. So as you can see, it's not easy to choose between the two. They're both doing pretty well. Side away, yaar. सर नहीं, सर आप बोल के जाइए, सर रिकमेंडेशन देके जाइए। See, it's not easy to choose between the two. But what you can do is actually just do simple index investing. You can invest in Nifty 50, or if you really want banking exposure, just look at Bank Nifty. Why choose when you can diversify? But if you do want to choose and learn a long-term investing system, you should join Prime. In this 2-day on Saturday and Sunday, you will learn with an actual mentor, and through proof of work, you will learn how to create an investment strategy or even learn trading. It's a great way to learn because not only do you learn by doing, you're also able to get feedback from the mentor and learn in a community. So if you ever wanted to delve into this world, do check out learner.com, apply for Prime. But remember, everyone can apply, it's free, but not everyone gets in. Also, what do you guys think about SBI? Lunch ke baad, and smash that subscribe, like button. See you in the next video and tell us if you like this format. Did you guys enjoy it? ऐसे ही थोड़ी किसी को भी लोन दे देते हैं। एकदम सही। नहीं, अरे बहुत अजीब हो जाएगा यार। अरे हाँ, ऐसे यार, मतलब नहीं ऐसे करते यार। सॉरी गाइस, ये इनका काम है, हम प्रोफेशनल रहते हैं। ऐसे नहीं ना सकते।